Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum educarians. I hope you are doing well and taking good care of yourself. Welcome in computer class, lesson number 3. Today's topic is operating system. Unit number 3, the operating system. Dear students, before going to start lesson number 3, let's take a quick review of lesson number 2. Icons. Dear students, icons are small graphics on the desktop with names such as My Computer, My Document, Recycle Bin, etc. When we double-click any icon, it opens up in a new window. Icons represent programs, files, or folders. Some commonly available icons are My Computer, Internet Explorer, Recycle Bin, My Document, and My Network Places. Taskbar. Dear students, taskbar is a long rectangular bar present at the bottom of the desktop. A taskbar has many buttons on it like start button, clock button, etc. Active window. We can open a program by simply double-clicking on Program tab. We can also open the window of more than one program at the same time. Dear students, the window on which we are working is called the active window. Let's start lesson number 3. The material required for today's lesson is lead pencil, eraser, sharpener, highlighter, ruler, computer textbook, computer notebook, and winter pack. Dear students, I hope all of you are having this material and get ready for today's lesson. Unit number 3, MS Windows, the operating system. Dear students, the contents included in this lesson are opening a software, start button, application window, and components of application window. Dear students, I hope by the end of this lesson you will be able to learn about start button of software. You will be able to know what is application window and components of application window. You will be able to know what are control button. So let's begin. Please open your computer textbook and come to page number 28. Write today's task, day and date on your textbook. Start button. This is the most important button on the taskbar. It is like a key to all the options of Windows. It appears on the left side of the taskbar. Dear students, हमारे पास taskbar के left पे जो button show हो रहा है, that is called the start button. There are a lot of options available in the start button. When we click on the start button, a start menu appears. जब हम start button पे click करते हैं, हमारे पास एक start menu appear हो जाता है, as you can see in the figure. The start menu has options that we can use to work with Windows. Some of these options are as follows. Turn off computer. Turn off computer is used to turn the computer off. Dear students, with the help of turn off computer, हम अपने computer को turn off कर सकते हैं. All programs is used to choose the programs to work on. With the help of all programs button, हम किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके उस पर वर्क कर सकते हैं. सर्च बटन. दिस बटन इज यूज्ड टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर. हम सर्च बटन की मदद से कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं. कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर. कंट्रोल पैनल की मदद से हम कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. माय डॉक्यूमेंट is used to choose the document to work on. Dear students, highlight the main points on your textbook. Come to the page number 29 of your textbook. Application window. Dear students, when we double click on an icon on the desktop, it opens in a new window. We have already discussed in previous lesson about icons.
कि हमारे पास डेस्कटॉप पे जो स्मॉल पिक्चर्स नेम के साथ शो हो रही होती हैं, दैट आर कॉल्ड आइकन। जब हम किसी भी आइकन पे 2 टाइम क्लिक करते हैं तो हमारा वो आइकन एक न्यू विंडो में ओपन हो जाता है। इट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन विंडो। For example, on double clicking my document icon, it opens up in a new window. Dear students, अगर हम my document icon पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास my document एक न्यू विंडो पे अपीयर हो जाएगा, as you can see in the figure. Title bar. Dear students, there is a blue or pink strip on the top of the window. This is called the title bar. Title bar पे हमारे पास उस डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है जिस डॉक्यूमेंट को हमने ओपन किया होता है। कंट्रोल बटन। देयर आर 3 buttons on the extreme right of the title bar. टाइटल बार के राइट साइड पे जो 3 buttons शो हो रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड द कंट्रोल बटन्स। दे सर्व 3 purposes. Menu bar. Dear students, menu bar is just below the title bar. मेन्यू बार हमारे पास टाइटल बार के नीचे शो हो रहा होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर. इट कंटेन्स द मेन्यू फॉर डिफरेंट टास्क. इसकी मदद से डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा. वर्क एरिया. इन दिस एरिया वी मे फाइंड द लिस्ट ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स. स्टूडेंट्स, वर्क एरिया में से हम डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑन योर टेक्स्ट बुक. Let's come to know the components of application window. Title bar. This is the blue strip on top. It displays the name of the window. Dear students, हमें विंडो के टॉप पे जो ब्लू या पिंक कलर की स्ट्रिप शो होती है, दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार. टाइटल बार पे हमें उस विंडो का नेम शो होता है जिस विंडो को हमने ओपन किया होता है. कंट्रोल बटन. देयर आर 3 buttons on the extreme right of the title bar. टाइटल बार के राइट साइड पे जो हमें 3 buttons शो होते हैं, they are called control buttons. As you can see in the figure, they serve 3 purposes. Minimize button. It minimizes or shrinks the window from the screen to the taskbar. The first button is called minimize button. Dear students, minimize button पे क्लिक करने से हमारी विंडो मिनिमाइज हो जाती है और टास्क बार पर उसका आइकन हमें शो होता है. Restore button. The second button is restore button. It reduces the size of the window. When we click on it once, the size of the window reduces. डियर स्टूडेंट, इस बटन पे क्लिक करने से हमारी विंडो का साइज स्मॉल हो जाता है, एज यू कैन सी इन द फिगर. एंड द बटन चेंजेस टू द मैक्सिमाइज बटन. और हमारी रिस्टोर बटन मैक्सिमाइज बटन पे कन्वर्ट हो जाता है. नाउ ऑन क्लिकिंग मैक्सिमाइज बटन द विंडो रीअपीयर्स ऑन द फुल स्क्रीन. अगर हम मैक्सिमाइज बटन पे अब क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो दोबारा फुल स्क्रीन पे शो होने लग जाती है. The third button is close button. It closes down the window. With the help of close button, हमारी विंडो क्लोज हो जाती है और हमें डेस्कटॉप अगेन शो होने लग जाता है. Dear students, highlight the main points on your textbook. Come to the page number 30 of your textbook. Let's come to know the component number 3 of application window, that is called the menu bar. It is just below the title bar. It contains the menu for different tasks. For example, file, edit and view. Dear students, मेन्यू बार की मदद से डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. हम डिफरेंट फाइल्स ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को डिफरेंट डिजाइन में व्यू कर सकते हैं. वर्क एरिया. In this area, we may find the list of folders and files or a workspace for typing and drawing. Work area में हमारे पास files और folders शो हो रहे होते हैं. इसके अलावा हम न्यू फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करके टाइपिंग या न्यू वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं. Dear students, highlight the main points on your textbook.
Time to start our winter pack work. Dear students, please open your winter pack and come to page number 13. Let's start the worksheet of your number 3, MS Windows, the operating system. Come to the question number 1. Circle the correct option. Dash button shrinks the window from the screen to the taskbar. Dear students, we have already discussed in previous slide that the minimize button shrinks the window from the screen to the taskbar. The start button is located on the taskbar. The most important program on any computer is operating system. On the desktop, the small pictures with names are called icons. Wallpaper is the background picture that we see on our desktop. Dear students, with the help of this slide, solve question number 1 on your winter pack. Let's start question number 2. Write T for true and F for false statement. Microsoft Windows is the least commonly used operating system. Dear students, it's false. Actually, the Microsoft Windows is the most commonly used operating system. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. A folder is like a bag that stores a group of files or other folders. Yes, dear students, is true. Folder हमारे पास एक बैग की तरह हो जिसमें हम अपने डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं. The manager of a computer is called GUI. Dear students, it's true. The manager of the computer is called operating system, and operating system is also called graphical user interface. A file is a resource for strong information. Yes, dear students, it's true. Files में हम बहुत ज़्यादा information store कर सकते हैं. Desktop is like a study table. It's true. Dear students, for question number 2 on your winter pack with the help of this slide. Let's start the question number 3 of your winter pack. Label the parts of the window in the picture. This is called the title bar. Dear students, is the blue strip on top. It displays the name of the window. Title bar में हमें उस window का name show होता है, इस window को हमने open किया होता है. Menu bar. It is just below the title bar. टाइटल बार के नीचे जो हमारे पास स्ट्रिप शो हो रही होती है दैट इज कॉल्ड द मेन्यू बार. इट कंटेन्स द मेन्यू फॉर डिफरेंट टास्क. कंट्रोल बटन. देयर आर 3 buttons on the extreme right of the title bar. टाइटल बार के जो राइट साइड पे आपको 3 buttons शो हो रही होती हैं दैट आर कॉल्ड द कंट्रोल बटन. दे सर्व 3 purposes. Work area. Dear students, in this area we may find the list of folders and files. Taskbar. Taskbar is a long rectangular bar present at the bottom of the desktop. A taskbar has many buttons on it. Dear students, label the parts with the help of this slide on your winter pack. I hope today's topics are now clear and you got each and every point. It's time to write task to do. The task to do for you is learn highlighted points from page number 28 till 30. Learn and solve worksheet on your winter pack. Dear students, the task to do must be done in a very neat and presentable manner. I hope today's topic will be helpful for you. Best of luck for your home task. Allah Hafiz.